गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। दिस इज इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच आर स्पेशली डिजाइंड फॉर SSC JE एग्जाम और गेट एग्जाम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे MCQs in irrigation engineering starting from question number 211 to 220. So far we have completed 21 videos on irrigation engineering, जिसमें हर वीडियो में हमने 10 MCQs आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग डेवलप की होगी। CivTech Simplified is a platform designed for civil engineers and professionals to enhance their capacity in civil engineering as well as public procurement। और अगर आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल के ऊपर मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड। नेशनल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली कवर्ड इन दोज वीडियोस, सो प्लीज वॉच दोज वीडियोस एज वेल। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिविल इंजीनियरिंग बोनस एग्जाम MCQs इन इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 22 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 211, which says that the level of a canal diversion headworks depends upon option A discharge perimeter, option B pond level, option C full supply level of canal and option D all of these। canal diversion headworks का लेवल जो है वो इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपका डिस्चार्ज कितना है, पॉन्ड लेवल, और उसके अलावा FSL के ऊपर भी, कैनाल के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 212 rivers on alluvial plains may be option A meandering type, option B aggregating type, option C degrading type, option D all of these। Again, all of these is the correct option. Rivers on alluvial plains are meandering types, aggregating and degrading type. So D here is the correct answer for this. 213. An aggrading river is a dash river. Option A scurrying, option B silting. So it's a silting river. B is the correct option. 214. A degrading river is a scurrying river. ऑप्शन ए इज यस, ऑप्शन बी इज नो। डिग्रेडिंग रिवर जो है वो स्करिंग होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 215 अ रिवर meandering through an alluvial plain has a series of consecutive curves of revealed order connected with short straight sketches is called option A crossing, option B meandering belt, option C meandering length, option D none of these. So it's crossing. A is the correct option for this question. 216. The width of meandering belt is option A transverse distance between the apex point of one curve and apex point on reverse curve. Option B axial distance along the river between tangent point of one curve and tangent point of the other curve are same order. Option C axial distance along the river between the apex point of one curve and apex point on reverse curve. Option D transverse distance along the river between tangent point of one curve and tangent point of other curve or same order of same order. So A here is the correct option। meandering belt जो है वो transverse distance between apex point of one curve to the apex point of the reverse curve होता है। A is the correct answer for this question। 217. The degree of sinuosity is the ratio between option A meander length and width of meander, option B meander length and width of river, option C curved length and straight air distance, option D none of these। So sinuosity जो है that is the ratio between curved length and straight air distance। C is the correct answer for this question। 218. Porosity of a meandering river is the ratio of option A meander length to width of meander, option B meander length to width of river, option C curved length along the river to the distinct axial length of the river, option D direct axial length of the river to the curved length along the river। So C again is the correct option, curved length along the river to the direct axial length of the river। 19. The porosity of a meandering river is always dash 1, option A equals to, option B less than, and option C is greater than। C is the correct option for this question। 220. The primary cause of meandering is the excess of total charge during floods when excess of turbulence is developed. Option A is true and option B is false. Again, A is the correct answer. The primary cause of meandering is the excess of total charge during floods with excess of turbulence is developed. A is the correct answer for
of this question, which is true. So friends, this was part 22 ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें मेनली हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और इसमें मोस्टली रिवर्स के बारे में क्वेश्चन थे, उनकी अलाइनमेंट के बारे में, मेंडरिंग रिवर्स के बारे में, और अलूवियल प्लेन्स में जब रिवर फ्लो कर रहा होता है सो कर्व्ड अलाइनमेंट लेता है। तो हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी मेंडरिंग के बारे में। आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी और फ्यूचर वीडियोस में भी इस तरह की टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आपको एलेबोरेट करेंगे। सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट, जिसमें हम फर्दर 10 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।